Right. So we'll have a discussion on the meningitis today. Okay. So when we discuss about the meningitis, you must remember one thing. Okay. What is basically meningitis? It is the inflammation of the pia mater, arachnoid mater, plus the cerebrospinal fluid. Okay, which is present inside that. Understood? Okay. We have discussed actually in detail about the meninges. Okay. What are meninges? Okay. What is the composition of that? How the CSF is actually made inside the meninges. Right. Okay. Acha. So now let's discuss about the meningitis. What is basically meningitis? First of all, you need to understand acute bacterial meningitis is a life-threatening emergency, right? अब इसमें जो सबसे पहले क्या है हमारे पास acute bacterial meningitis, right? और ये सबसे खतरनाक है, right? It is actually life-threatening emergency, okay? उसके बाद है viral. Viral is more common and clinically less morbid, okay? Viral इसमें जो है this is actually more common but it is less morbid. Risk factors for meningitis include recent ear infections, sinusitis, immunodeficiencies, recent neurosurgical procedures, crowd livings जैसे कि colleges में, dorms में, military में, okay, and sick contacts. So let's discuss these in detail, okay. Let's understand these actually. कि ये एक्चुअली में होता क्या है. कैन यू एक्चुअली सी दिस डायग्राम. दिस इज डायग्राम ऑफ अ पर्सन. ओके. अच्छा. नाउ नॉर्मली क्या होता है कि ये है फॉर एग्जांपल क्रेनियल बोन. ओके राइट. दिस इज द क्रेनियल बोन. अब इस क्रेनियल बोन्स के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है. इस क्रेनियल इन क्रेनियल बोन्स के अंदर हमारे पास होता है हमारा ब्रेन. ओके. फॉर एग्जांपल यू हैव टू सपोज कि ये क्या चीज़ है. दिस इज द ब्रेन. ओके. दिस इज द ब्रेन. दिस इज द ब्रेन. अंडरस्टूड. अब ब्रेन को किसने कवर किया होता है. ब्रेन को हमारे पास एक तो है फॉर एग्जांपल दिस इज द पायामीटर. ओके. दिस इज द what thing. This is the layer of the brain which is called as the pyometer. Okay, right. Outside the pyometer or above the pyometer, okay, we have another layer that is called as the arachnoid matter. Okay, that is called as the arachnoid matter. Simple. Okay, this is the arachnoid matter. Now between that, this is actually called as the arachnoid matter. Let me write down this for you. Okay, arachnoid and the inner layer is called as the pyometer. Okay, in between arachnoid and pyometer we have actually fluid. Okay, that fluid is called as the cerebrospinal fluid. Fine. Okay, so what happens sometimes when the bacteria enters into the cerebrospinal fluid, it will cause the inflammation of the arachnoid matter, pyometer, and it will cause inflammation inside the cerebrospinal fluid also. Okay, right. So this is called as the meningitis now. Okay, meningitis. Understood. Okay, so this is meningitis. Now let's discuss about these meningitis in details, right. For example, the very first thing that you have to remember कि ये आपके meninges तक पहुंचता कैसे. Okay, that is actually the main question कि ये पहुंचता कैसे. So when we discuss about the for example transmission of these, okay, or how it enters into our body, the very first thing that you have to remember, it can enter or it can be implanted directly into our body. Okay, right. For example, the very first one is the direct implant. I will tell you get direct implant actually mein hota kaise. Fine. Let's do this now. The very first one that you have to remember, these can actually get into your meninges by some kind of head trauma. Okay, sometimes आपको पता है ना कुछ head trauma होता है. head trauma होने की वजह से बोन्स जो है हमारे ब्रेक होते हैं, राइट. तो उन ब्रोकन बोन्स के थ्रू, राइट, जब होल्स वगैरह क्रिएट होते हैं आफ्टर द हेड ट्रॉमा, तो वहाँ से ये पैथोजेंस हमारे मेनिंजेस तक पहुंच सकते हैं. ओके राइट. इंक्लूडिंग दैट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, देयर कैन बी सम काइंड ऑफ स्कल फ्रैक्चर. ओके. स्कल फ्रैक्चर्स में भी क्या होते हैं, छोटे छोटे से होल्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे स्कल में. तो जो बैक्टीरियाज वगैरह है उनको एक मौका मिल जाता है, राइट, और वो हमारे मेनिंजेस तक पहुंच जाते हैं. अंडरस्टूड. ओके. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बोन्स है ना आपके, राइट. अगर कोई भी स्कल फ्रैक्चर हुआ तो ये बोन्स क्या है, ये थोड़ा सा आगे जाएगा, फॉर एग्जांपल ये पीछे जाएगा, और इन बिटवीन देम देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ होल, राइट. तो इस होल के थ्रू फिर ये बैक्टीरिया जाएगा आपके मेनिंजेस में, राइट, एंड इट विल कॉज मेनिंजाइटिस देयर. अंडरस्टूड. ओके राइट. सो द नेक्स्ट वन इज एक्चुअली द yes, the next one is the for example sometimes it can also get into the meninges with the help by like some kind of brain surgery. Okay right. Brain surgery से ये जा सकता है हमारे meninges में. इसी तरह से do you know about LP और lumbar puncture. lumbar puncture से भी ये जा सकता है. Okay. And there is also kind of like congenital defect by the name of the spina bifida, right. I hope you know that spina
बिफीडा, ओके। तो स्पाइना बिफीडा से भी ये जा सकता है हमारे मेनिंजियल लेयर के अंदर, ओके, राइट। सो दीज आर एक्चुअली सम एग्जांपल्स ऑफ द डायरेक्ट इम्प्लांट व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, including that when we discuss about, for example, the there is one another way of transmission actually which is called is the through the paranasal sinuses, okay, right. It can also go into our meninges with the help of the paranasal sinuses, fine. A paranasal sinus is कौन से, listen very carefully. Can you appreciate these diagram? This is a diagram of a person, okay, especially the head, okay. अब आपके head के अंदर क्या होता है, आपके head के अंदर right here, okay, let me write down here, जस्ट हियर, ओके, जस्ट हियर, यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे पास साइनसेस प्रेजेंट होते हैं, ओके, राइट, साइनसेस, एयर केविटीज, फाइन। इस साइनस को हम क्या कहते हैं, इस साइनस को हम कहते हैं फ्रंटल साइनस, ओके, फ्रंटल साइनस, अंडरस्टूड, ओके। इसी तरह से ये है साइड से ये डायग्राम, और जब आप सामने से देखोगे किसी भी पर्सन को, राइट, इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, साइनसेस प्रेजेंट होते हैं, राइट, ओके। और इस साइनस को हम क्या कहते हैं, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड इज द फ्रंटल साइनस, right, okay, including that. Can you see these diagram, this little area, okay, right here, यहाँ पे हमारे क्या कौन से साइनसेस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे हमारे पास होते हैं एथमोइड साइनस, ओके। Here we have our ethmoid sinus. Understood? Ethmoid sinus, fine. और यहाँ पे जब आप सामने से देखोगे तो आपको कुछ यहाँ पे नजर आएगा, राइट, ये ethmoid sinus. Understood? Fine. अच्छा, can you appreciate these small area? This is actually the area for the sphenoid sinus. Okay, this is the area for the sphenoid sinus. Understood? This is the area for the sphenoid sinus, right? अच्छा, now see ये वाला एरिया, यहाँ पे आपके चीक्स में, राइट, यहाँ पे, फाइन, यहाँ पे भी बोन्स होते हैं, फाइन। और वो बोन्स क्या बनाते हैं, दोज बोन्स विल मेक द मैक्सिलरी साइनस, ओके, दोज बोन्स विल मेक द मैक्सिलरी साइनस, राइट। सो आई होप यू नो दीज स्ट्रक्चर्स बिकॉज दे आर द बेसिक्स, ओके, फ्रॉम द एनाटॉमी, राइट। यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिलरी साइनसेस, राइट। अच्छा, अब कैन यू सी एक्चुअली ये जो फ्रंटल साइनस है, दूसरा है एथमॉइड साइनस, और तीसरा है स्फेनॉइड साइनस, दे आर इन वेरी वेरी क्लोज रिलेशन विद द मेनिंजेस, ओके, राइट। तो क्या होता है, कभी कभी जब पैरानेजल साइनसेस में, दे आर एक्चुअली कॉल्ड द पैरानेजल साइनसेस, फाइन, ओके, पैरानेजल साइनसेस, जब इनके अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, राइट, ओके, उस इन्फेक्शन की वजह से वो इन्फेक्शन उस पैथोजन को कभी कभी क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है हमारे इस मेनिंजियल लेयर में। जब जैसे ही पैथोजन हमारे मेनिंजियल लेयर तक पहुंचता है, राइट, इट विल कॉज meningitis, it will cause inflammation there, okay, right, and that will lead to the meningitis, understood, okay। तो ये है एक एग्जांपल थ्रू दी पैरानेजल साइनसिस के, ये पैरानेजल साइनसिस के थ्रू कैसे हमारे मेनिंजेस तक पहुंचता है, फाइन, ओके। अच्छा, एक तो ये है, उसके बाद क्या है, समटाइम्स दिस कैन आल्सो एंटर इनटू आवर meninges through the hematogenous route, okay, hematogenous route, okay, fine। हेमाटोजेनस रूट का तो आपको पता ही होगा, हेमाटोजेनस रूट का मतलब क्या है, कि दीज विल स्प्रेड देयर बाय ब्लड, ओके, राइट। क्योंकि कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं, राइट, हु हैव फॉर एग्जांपल द न्यूमोनिया, ओके, न्यूमोनिया, राइट, न्यूमोनिया हो सकता है उनको, या तो फिर ब्रोंकोएक्टेसिस, ओके, ब्रोंकी एक्टेसिस, फाइन, ब्रोंकी एक्टेसिस हो सकता है उनको, राइट। Including that, sometimes there can be bacterial endocarditis, okay, bacterial endocarditis, right. So you can clearly see in these pictures, sometimes there can be pneumonia, bronchiectasis, okay, or bacterial endocarditis, fine। तो इन रूट्स के थ्रू भी ये बैक्टीरिया हमारे मेनिंजियल लेयर तक पहुंच सकता है, ओके, एंड देयर इट विल कॉज मेनिंजाइटिस, राइट। इसी तरह से है वेरिसोला जोस्टर वायरस, ओके, नॉट ओनली बैक्टीरियाज, viruses are also present, okay। Sometimes there can be for example the rabies virus, okay। तो ये क्या करते हैं, ये जो फॉर एग्जांपल वायरसेस या रेबीज वायरस है स्पेशली, राइट, ये क्या करते हैं, ये हमारे वेन्स के थ्रू हमारे मेनिंजियल लेयर तक पहुंचता है, ओके, राइट, हमारे मेनिंजेस तक हमारे वेन्स के थ्रू ये पहुंचता है, फाइन, ओके। So these are few examples actually. So now when we discuss about the types of the meningitis, okay, types में इसके आपने क्या क्या याद रखने हैं when we discuss about the types, because this type is very important, okay। The types, the very first one is as we discussed, okay, that is the septic, okay। septic में कौन involve होता है, bacteria involve होते हैं, simple, okay। उसके बाद है aseptic, aseptic में कौन involve होता है, aseptic में viruses involve होते हैं,
okay, viruses, right? इसी तरह से third type है इसका actually, that is chronic. So we will not discuss the chronic, we will discuss only the septic and aseptic forms, okay, because they are the most relevant. Fine. अच्छा, so when we discuss about the, अच्छा, जब आपके पास पेशेंट आता है मेनिंजिस का, राइट, मेनिंजाइटिस वाला, सो एट दैट वेरी मोमेंट you have to give the empirical treatment to the patient, okay, right? You have to give empirical treatment to the patient because this empirical treatment is very very important, right? जितना जितना ज़्यादा आप ट्रीटमेंट में डिले करते जाओगे उतना ही ज़्यादा पेशेंट का जो फॉर एग्जांपल कंडीशन है वो वर्स होता जाएगा, राइट? ओके, सो हमें कैसे पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल किस पेशेंट को कौन सा एंटीबायोटिक देना है, राइट? तो वो हम कैसे पता लगाते हैं? विद द हेल्प ऑफ द एज ग्रुप, ओके, बिकॉज देयर आर सम स्पेसिफिक एज ग्रुप, उस फॉर एग्जांपल देयर आर सम न्यूनेट्स, राइट? अब न्यूनेट्स के अंदर अगर देखा जाए तो न्यूनेट्स के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरियाज मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं, राइट, दैट इज एक्चुअली बीटा हेमोलिटिकस, Group A, Streptococcus. Fine, okay. Including that, sometimes there can be E. coli, right? Okay. So अगर फॉर एग्जांपल हम टीन्स के अंदर देखें तो वहाँ पे कौन सा सबसे ज़्यादा कॉमन है? एन मेनिंजिटिस, ओके, राइट, या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. Fine. So I will discuss all those age groups, including the bacteria and the treatment with you guys, okay, in the next lecture.